Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें समरफील्ड्स मॉडिफिकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी ए विषय रे पढिबा सो आम देखला बोर्स एटम मॉडल आउ जो बोर्स थ्योरी देले स्पेशली सेटा हाइड्रोजन एटम पाई ठीक बाहरला किंतु बहुत गुड़ाए डिस्क्रिपेंसी बा लिमिटेशंस से देखा गला सो ताकू पुणी मॉडिफाई कले नेक्स्ट साइंटिस्ट समरफील्ड ओके सो देखो बोर्स थ्योरी predicted with great accuracy about the spectral lines of hydrogen atom and also singly ionized helium atom, but Bohr's model could not explain the fine structure of hydrogen spectral lines. Okay, so fine structure जो आमे देखुचु एक्चुअली एटा होची स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ओके स्पेक्ट्रल लाइन्स गुड़ा स्प्लिट कर जाउची बा विच्छुरित हो जाउची into several close distinct components when they are observed with instruments having high resolving power or high resolution. So it means each Bohr's energy level in the hydrogen atom actually it consists of several components which are close together in energy. Okay, so energy level ro splitting hochi, right? So Bohr's atom model of hydrogen atom here the electron was assumed to be moving in circular orbits किंतु समरफील्ड ताको मॉडिफाई कले से कहले ए जो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा जाई परिबो जदि हमें एज्यूम करिबा जे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट रादर देन सर्कुलर ओके सो इन जनरल ए जो इलिप्टिकल ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन बुलुची द न्यूक्लियस इज प्लेस्ड एट वन ऑफ इट्स फोकी ओके एंड जो बोर्स थ्योरी रो सर्कुलर ऑर्बिट्स को एटा गोटे स्पेशल केस बोली धरि निया गला ओके सो लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज शोन हियर इन द फिगर ओके एटा होची इलेक्ट्रॉन टा ओके आउ न्यूक्लियस रोची ए जगह रे एट वन ऑफ इट्स फोकी दिस इज द इलिप्टिकल पाथ ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके सपोज इलेक्ट्रॉन रो मास हला स्मॉल m चार्ज हे गला स्मॉल e and it is revolving around the nucleus in an elliptic orbit and nucleus ro charge hela plus ze jemti कहली it is placed at one of its foci okay now the instantaneous position of this electron can be described in terms of polar coordinates okay polar coordinates बा plane polar coordinates दुईटा में जदि नेला गोटे हला r आ गोटे हला थीटा so r हला distance from nucleus to the electron आउ एठी ए थीटा होची एजुमुथल एंगल ओके दिस एंगल इज थीटा राइट याकू कहबा हमें एजुमुथल एंगल व्हिच इज द एंगल बिटवीन r एंड द सेमी मेजर एक्सिस ए जो डॉटेड लाइन टा होची सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दिस इलिप्स राइट सो these two polar coordinates are actually periodic functions of time and they must be quantized separately okay suppose आमे एबे कहला जे पी आर आउ पी थीटा ये ही गला अकॉर्डिंगली द रेडियल एंड एंगुलर मोमेंटा ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन अकॉर्डिंग टू विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स ओके द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ पी थीटा d theta and p r dr these two will be equal to n theta h and n r h respectively okay so n theta and n r hegla integers which are called the azimuthal and radial quantum numbers respectively now according to classical mechanics ame angular momentum जदि देखिबा गोटे आइसोलेटेड सिस्टम पाई दिस इज कंजर्व्ड
So p theta d theta, this is found out to be as जो आम इक्वेशन देखला ऊपर n theta h आउ p theta को आम बाहर को नहीं आसिया बिकॉज इट इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ताले p theta बाहर को आसिला साइक्लिक इंटीग्रालटा d theta ऊपर पड़िला व्हिच इज इक्वल टू n theta h ताले ए जो एजुमुथाल एंगल रो आम इंटीग्रेशन करले लिमिट जदि पकिबा 0 to 2 पाए पड़िबो सो सिंपली यार वैल्यू आसीगला 2 pi. So p theta into 2 pi which is equal to n theta h. Okay, ताले p theta रो वैल्यू आसिगला n theta h by 2 pi or simply n theta h cross. Okay, so h cross होगला h by 2 pi. h रो वैल्यू तुम जानी छो 6.6 into 10 to the power minus 34. Okay, एटा होची प्लांक्स कांस्टेंट. Now जो इलिप्टिकल ऑर्बिट आमे कहितिला सपोज आमे सेतिर नेला सेमी मेजर एक्सिस को ए बोली कि लिखिला आउ तार एसेंट्रिसिटी को लिखिला आमे इप्सिलॉन. ओके, देन द मोशन ऑफ दिस इलिप्स कैन बी गिवन. एटा इक्वेशन टा को मन रखिबो हैला, यार डेरिवेशन पार्ट को आमे जाउनु डायरेक्ट इक्वेशन टा लिखाई छी. ओके, सो मोशन ऑफ द इलिप्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन 1 by r equal to 1 plus epsilon cos theta divided by a into 1 minus epsilon square. Now आमे याकू एबे डिफरेंशिएट करिबा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. आमर काम हैला इथरु आमे आकू सॉल्व करि जिबा आउ p थीटा रो वैल्यू बाहर करिबा. राइट, सो देखो याकू डिफरेंशिएट कला. ओके, अकॉर्डिंगली तापरे आमे आकू जदी प्रोसीड करूछु कैलकुलेट करूछु आउ r रो वैल्यू टाकू पुट करिबा. r रो वैल्यू कोठु आसीबो इक्वेशन 2.54 माने जो मूल इक्वेशन टा आमे नेइछु दिस वन. ओके, ए इक्वेशन रु r रो वैल्यू गोटे आछि. ओके, ताकू एबे एठी इक्वेशन 2.55 रे आमे पुट करिबा. ओके, अगेन वी गो ऑन फॉर फर्दर कैलकुलेशन. ताले देखो एति कि आमे पाइला अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2.52 जोटा आमे देखितिला nrh. ओके, यार वैल्यू आमे पाउतला केते साइक्लिक इंटीग्रल pr dr. ताले pr को आमे सिंपली लिखि परिबा mv. एटी v हेगला जो इलेक्ट्रॉन रो एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन तारो लिनियर वेलोसिटी व्हिच इज अलोंग द टेंजेंट टू द इलिप्टिकल और कर्व्ड सरफेस. ओके, सो mv dr रो ऊपर एठी इंटीग्रेशन पड़िला. ओके, तापरे एठी v को आमे सिंपली लिखि परिबा dr by dt. अगेन वी गो ऑन फॉर फर्दर कैलकुलेशन. ताले p थीटा रो वैल्यू देखो आमे जानिछु इट इज इक्वल टू mvr बिकॉज इट इज द एंगुलर मोमेंटम. ओके, सो याकू आमे ऑल्सो लिखि परिबा m r स्क्वायर ओमेगा और m r स्क्वायर d थीटा बाय dt. ओके, ओमेगा एठी हेगला एंगुलर वेलोसिटी. राइट, सो एबे आमे पाउछु कोन देखो m d थीटा बाय dt इक्वल टू p थीटा बाय r स्क्वायर और n थीटा h बाय 2 पाई r स्क्वायर. आमे p थीटा रो वैल्यू टाकू पुट कर देला. राइट, सो एबे এই जो वैल्यूटा आमे पाइला ताकू इक्वेशन 2.58. ओके, इक्वेशन 2.58 माने दिस इक्वेशन एठी आमे पुट करिबा. ओके, सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी आर गेटिंग दिस मच. nr रो वैल्यू देखो फाइनली आसुची n थीटा बाय 2 पाई देन द साइक्लिक इंटीग्रल epsilon square sin square theta divided by 1 plus epsilon cos theta रो होल स्क्वायर इनटू d थीटा. मने रखो एठी हमें इक्वेशन 2.57 को भी यूज करिछु. ओके, दिस वन. राइट, नाउ थीटा रो वेरिएशन एबे करबा जे ई इंटीग्रेशन को हमें बाहर करबा को हेले वेरिएशन हला फ्रॉम 0 to 2 पाई लिमिट लगेबा. ओके, एंड वी यूज द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन. ओके, सो यारो वैल्यूटा आसिला देखो nr plus n theta which is coming out to be n theta by 1 minus epsilon square रो square root. Okay, so 1 minus epsilon square रो square root याकू आमे जदि बाहर करबा एठी टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि. दिस शुड बी epsilon square. राइट, मु एडिट कर देबी. ओके, सो यारो वैल्यूटा आमे पाउछु केते n theta by nr plus n theta. ओके, सो दिस इज नथिंग बट एबे याकू आमे लिखि परिबा 1 minus epsilon square equal to n theta square by nr plus n theta रो होल स्क्वायर which is equal to b square by a square. मन रखो याकू. ओके, सो a जेमती कहितला हमें सेमी मेजर एक्सिस, b हेगला सेमी माइनर एक्सिस. ओके, सो
एठी आमे also लिखि परिबा जो सेमी मेजर एक्सिस अछि a, this can be shown here that the semi major axis a is equal to a0 n square by z. Okay, so it a0 टा कोन, this is actually the radius of Bohr's first orbit. Okay, मु एठी निजे लिखिछि which value is equal to epsilon 0 h square by pi m e square. Okay, so याकू हमें direct put भी करि परिबा. Okay, now according to the geometrical consideration, geometrical properties गोटे ellipse रो आमे जदि देखिबा the quantity 1 minus epsilon square. Okay, एई जो quantity रा अछि this may have values between 0 and 1 obviously. Likewise n theta आउ n r जो अछि यार value केते हबो 0 1 2 3 and so on. Now when 1 minus epsilon square is equal to 0 ताले n theta हे गला equal to 0. ता माने एबे ए इक्वेशन को आमे जदि देखिबा then semi minor axis जो b अछि this must be equal to 0. Hence the ellipse will reduce to a straight line, right? Now it means that the electron will pass through a nucleus twice during its time period. Okay, but such type of motion is not possible. तेणु करी n थीटा रो वैल्यू केबे भी 0 हे पारिबो नाही, इलेक्ट्रॉन केबे भी न्यूक्लियस भीतर दे के जाई पारिबो नाही. ओके, सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n थीटा will be 1 2 3 4 and so on. We disregard the value 0. Okay, now n r रो वैल्यू किंतु एठी आमे नउचु 0 1 2 3 and so on. ताले सम जदि बाहर करिबा n r आउ n theta रो, this will be now 1 2 3 4 and so on. That means it will be an integer. Suppose आमे कहिला n r plus n theta equal to n. Okay, n हे गला एठी गोटे integer which is called as the principal quantum number, right? अच्छा, तापरे equation जो 2.61 आमे देखितिला. Okay, this now can be written as 1 minus epsilon square equal to n theta square by n square. Okay, एठी denominator को आमे replace करनेला जो n r plus n theta रो whole square थिला. Okay, which is now equal to b square by a square, or simply if we calculate for the value of b, then it is coming out to be b equal to a0 n into n theta by z. Okay, so this equation represents the condition of quantization of elliptical orbits. Okay, this is a very important equation. Okay, ताले ए equation को एबे लक्ष्य करो, जदि n रो value equal to 1 हला ताले n theta must be equal to 1. That means b must be equal to a or b must be equal to a0. Okay, hence the first orbit must be a circle because semi major और semi minor axis दुईटा जाको जदि समान हेगला, that means एटा होचे गोटे circle. Okay, so the Bohr's first orbit must be a circle. Okay, जोटा कि Bohr's theory रे आमे देखुतिला. तापरे n जदि आमे नेगला equal to 2 ताले n theta रो वैल्यू दुईटा आसीबो 1 और 2. Accordingly b हे जिवो 2a0 4a0. So that corresponding to n equal to 2 there is possibility of two numbers of orbits, out of which one will be a circle with n equal to 2 and theta equal to 2, and the other one will be an ellipse with n equal to 2 and n theta equal to 1. याकू एबे आमे फिगर जदि बुझिबा ताले देखो फर्स्ट केस रे आमे डिस्कस करथुला जेतेबेले n equal to 1 आउ n theta equal to 1 होतला, then we are getting simply a circle which is having a radius a0, right? तापरे सेकंड केस रे n equal to 2 हेले n theta equal to 1 आउ 2 आस्तला. सो जेतेबेले n आउ n theta रो वैल्यू समान आसी जाउची, then only we are getting a circle and this one is having a radius 4a0. किंतु जदि यार वैल्यू अलगा आसिला माने n theta equal to 1 आसिला, then we are getting an ellipse which is having a semi minor axis, that is b equal to 2a0, right? आ जदि थर्ड केस देखिबा n equal to 3 नै जिबा ताले n theta equal to 1 2 आउ 3 हबो. So again n आउ n theta समान हेले we are getting a circle which is now having a radius 9a0. आउ n theta equal to 2 हेले we are getting ellipse which is having semi minor axis 6a0. आउ n theta equal to 3 हेले we are again getting an ellipse
but now it is having semi minor axis equal to 3a0, right? acha aku padiba. Now electron which is revolving around the nucleus, obviously it will have a tangential velocity, okay, and it can be resolved into two components. गोटे है रेडियल वेलोसिटी which is tr by dt along the radius vector, आ गोटे है ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d theta by dt which is at right angle to the radius vector. So due to these two components we will have the kinetic energy accordingly, okay, this one, and it is nothing but pr square by 2m plus p theta square by 2mr square. Okay, further potential energy जदि देखिबा, electron and nucleus both are charged particle, electron negatively, nucleus positively charged, so electrostatic force of attraction रहुची which is giving you this potential energy. ताले total energy एबे जदि आमे बाहर करिबा which is the sum of kinetic and potential energy, so finally यारो expression आसिला En equal to minus mz square E4 divided by 8 epsilon 0 square h square n square. Okay, so এই equation को लक्ष्य करो, it is evident that the energy corresponding to a given value of principal quantum number, that is n. Okay, so this energy value will be same irrespective of the value of n theta which is the azimuthal quantum number. That means in other words जो आम इलिप्टिकल ऑर्बिट रो कॉन्सेप्ट बाहर कला, ओके, सो द ऑर्बिट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n, से सर्कुलर हो कि इलिप्टिकल हो, जदि टोटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रो वैल्यू सेम अच्छी, देन ऑल दीज ऑर्बिट्स विल हैव इक्वल एनर्जीज. ओके, हेंस जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट आम इंट्रोड्यूस करथिला, दिस इज नो मोर यूजफुल to explain the fine structure of spectral lines. So a fine structure को बुझेवा पाई Sommerfeld कौन कोले, again he modified this theory and he introduced the relativistic variation of electron mass. Okay, तो मैं पढ़ी थबो special theory of relativity रे, जदि गोटे body बा particle move करूची with some velocity v, then its relativistic mass m is equal to the rest mass m0 divided by 1 minus v square by c square रो square root. Okay, so Sommerfeld pointed out that the mass of an electron varies in the orbit. Okay, केमती यार वेरिएशन होची, जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी अच्छी जदि गोटे इलिप्टिकल ऑर्बिट आमे नबा, it is greater when it is near the nucleus and it is smaller when it is away from the nucleus. Okay, so due to this variation of velocity, the mass of electron also vary, okay, which is in accordance with the special theory of relativity. Okay, so if the relativistic effect is now taken into consideration, ताले energy जो electron रो आमे देखिबा, it will be found out to be depending upon both the principal quantum number n and also एबे azimuthal quantum number n theta ऊपर भी depend करिबो. Okay, so in this case the energy of electron, okay, direct expression को आमे आसीबा, it is given by, after introduction of the Sommerfeld relativistic correction, En, okay, this is equal to देखो ए टर्म टा जोटा ऊपर आमे टर्म देखुतला सीटा, okay, into 1 करा हिची. Okay, so this is the original term, ता सहित relativistic correction होची ए टर्म टा, okay, alpha square z square by n into 1 by n theta minus 3 by 4 n. Okay, so a first term देखो मैं एठी लिखिची, first term in this equation is same as in equation 2.64, which is the energy of electron in the orbit having principal quantum number n. तापरे second term जो आछी, it is the Sommerfeld relativistic correction. Okay, जो relativistic correction करले से through एटा arise करूची, and it is found out to be depending upon n theta and it results in the splitting of energy level, जो fine structure को ये explain करूची. Okay, so splitting of energy levels of the atom into number of permitted values of n theta, that is the angular momentum quantum number. आ गोटे एठी देखो टर्म अछि अल्फा, अल्फा माने एठी हैला यार वैल्यूटा e स्क्वायर बाय 2 epsilon 0 h c. सो याकू जदि हमें पुट करी कि यार सब वैल्यू कैलकुलेट करिबा, इट्स वैल्यू विल बी फाउंड आउट टू बी 1 by
137, and it is called the Sommerfeld fine structure constant, right? Acha. Now for n equal to 1 and n theta also equal to 1, that is there is only one energy level. Our orbit obviously circular habo. Now for n equal to 2, n theta equal to 1 and n theta equal to 2, that means there is two energy levels. Gote orbit circular, gote orbit hegala elliptic. Hence the frequency of radiation emitted in the transition of an electron from n2 level to n1 level. Okay, ଯେତେବେଳେ electron ର transition ହେଉଛି from n2 to n1, this will be slightly different according to the various values of the azimuthal quantum number n theta which are possible. Okay, and n theta ର value ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲା 1 ହେଉଛି ଆଉ 2 ହେଉଛି for n equal to 2. Okay, so the small variation in energy will result in small energy and frequency differences, and this will explain why a single line of hydrogen spectrum appears to be as a group of closely associated lines, jahaku ki ame fine structure of spectral lines boliki kohu, right? Acha, now since the change in mass is greatest at the perihelion, okay, perihelion mane जो Sommerfeld pointed out करके कहले जे जो इलेक्ट्रॉन रो वेलोसिटी टा बेसी रोची नियर द न्यूक्लियस, राइट? सो इट रिजल्ट्स इन अ प्रेसिशन of electron orbit, and the perihelion of the ellipse rotate as the time passes on. Okay, that means the major axis of the ellipse turns about the nucleus in the plane of ellipse. Okay, and the resultant path of the electron will not be a simple ellipse but a complicated curve. Okay, यार उन्हीं complicated curve को हमें आसीबा which is known as rosette. Okay, or rosette. Okay, so देखो this one is shown here. Okay, एटा तो प्रथम ऑर्बिट टा जोटा सर्कुलर, तापरे इलिप्टिक ऑर्बिट जदि हमें देखिबा इलेक्ट्रॉन टा एई भलिया इलिप्टिक ऑर्बिट रे बुलुची. ओके, सो एक्चुअली एई इलिप्टिक ऑर्बिट रो जदि गोटा हमें एनवलप तयारी करिबा ताले देखो ए डॉटेड लाइन रो सर्किल भितर एटा रहि जाउची, राइट? सो एटा गोटे कॉम्प्लिकेटेड कर्व तयारी करूची ता माने, राइट? आको बढ़िबा. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सिलेक्शन रूल. देखो समरफील्ड थ्योरी एक्चुअली प्रेडिक्ट कला जे जो एच अल्फा लाइन अच्छी, एच अल्फा लाइन माने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे जो बाल्मार सीरीज अच्छी तार फर्स्ट लाइन व्हेन द ट्रांजिशन इज फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट. सो एज पर समरफील्ड थ्योरी दिस एच अल्फा लाइन शुड कंसिस्ट ऑफ 6 कंपोनेंट लाइन्स. ओके, बट हाउएवर एक्सपेरिमेंटली देखा गला जे इट कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. ओके, माने थ्योरी कहूँ जे 6टा कंपोनेंट लाइन्स रे स्प्लिटिंग हवा कथा, किंतु एक्सपेरिमेंटली ताठू कम संख्यक लाइन्स आसिला, एक्चुअली 3टा लाइन आसिला. सो टू ओवरकम दिस डिस्क्रिपेंसी समरफील्ड इम्पोज्ड अ रेस्ट्रिक्शन upon the value of n theta. जो एजिमुथल क्वांटम नंबर अच्छी तार वैल्यू ऊपर गोटे रेस्ट्रिक्शन लगेले, आ एई रेस्ट्रिक्शन को कहा जाए सिलेक्शन रूल, which states that only those transitions are possible for which the azimuthal quantum number n theta value changes by plus or minus 1, that is delta n theta is equal to plus or minus 1. So ये जो selection rule it has great importance in the theory of atomic spectra. So जमती कहगला एच अल्फा लाइन रो स्प्लिटिंग एज पर समरफील्ड थ्योरी 6टा ट्रांजिशन लाइन्स आसीबा कथा. सो ये देखि पारथबो फिगर रे एटा n इक्वल टू 3 पाई एटा 3टा. ओके, बिकॉज n इक्वल टू 3 हेले n थीटा हो जिवो 1 2 3. ओके, सिमिलरली तळे देखो फिगर रे n इक्वल टू 2. ओके, सो दैट n थीटा हो जाउची 1 आउट 2. Accordingly we are getting 6 numbers of transition lines, right? Okay, ये 6टा लाइन आमे पाउछु. बट हाउएवर एबे जदि आमे सिलेक्शन रूल अप्लाई करिबा which states that delta n theta, okay, एटा एक्चुअली आउट बहिरु नैची, सो एठी n theta न लिखि के n phi लिखुची. ओके, सो delta n phi बा n theta प्लस और माइनस 1 को ही आमे नेबा. ओके, सो देखो एई ट्रांजिशन लाइन्स भितरे जदि आमे देखुछु 3 3 टू 2 1, 3 2 टू 2 2 और 3 1 टू 2 1. ओके, ये 3टा लाइन पाई डेल्टा n phi हो जाउची 2 और 0.
Okay, so this is what shown by the dotted lines. Okay, so এই তিনটা লাইন को आमे disregard करिबा बा forbidden lines बोली कि कहिबा तेणु करी बाकी जो एबे remaining lines रहिला ए solid line these are the permitted lines, hence we can say that this agrees with the actually experimentally observed data, and there are three component lines of your H alpha. Okay, so this explains the fine structure. Okay, acha at the end एबे shortcomings बा limitations देखि नबा टिके Bohr's Sommerfeld theory रो. Okay, so Bohr Sommerfeld atom model जो अछि it met only with the partial success. Okay, fully successful he पाला नहीं, and it has some of the following shortcomings. The first point रे कहूची it is based on the rival theories. Okay, माने the motion of electrons in orbit obeyed the law of classical mechanics, while the existence of stationary orbit and frequencies of emitted radiation are governed by quantum mechanics. आमे जानी जो classical आउ quantum, okay, they oppose each other. Okay, that is why they are also called rival theories. Okay, तापर second point रे कहूची the model could solve the spectroscopic problems of simplest hydrogen type atom, but failurity देखागला केतेबेले in case of complex atoms having large number of valence electrons, because then the equations governing the dynamical equilibrium become much more complicated. Okay, एटा गोटे limitation आसिला. तापरे third point रे ये कहूची the model could explain the fine structure of H alpha line जोटा हमें ऊपर देखिला बाल्मार series रो first line टा, and also the singly ionized helium atoms lines. Okay, but it could give only frequencies of spectral lines and was incapable to throw light on the intensities of spectral lines. Okay, केते intensity रो spectral lines पारिबो ता उपरे ए theory किछि कहि पारला नाही. Then fourth point रे it could not explain the phenomenon of anomalous Zeeman effect. एटा तमे atomic physics रे पढिबो splitting जो लाइन्स रही था एटॉमिक ट्रांजिशन रे. सो एनोमलस जीमैन इफेक्ट विषय रे एक्सप्लेनेशन दे पारला नहीं. ता छड़ा पास्केन इफेक्ट, पास्केन बैक इफेक्ट जोटा आउ स्टार्क इफेक्ट एई ऊपर भी समरफील्ड थ्योरी किछि खास एक्सप्लेनेशन दे पारला नहीं. तापरे लास्ट पॉइंट रे इट वाज इनकेपेबल in explaining the distribution and arrangement of electrons in the atoms. Okay, particularly को भलिया भाबरे डिस्ट्रीब्यूट बा अरेंज हे कि अछंती जो इलेक्ट्रॉन गुडा एटम्स रे ता ऊपर ठीक भाबरे एक्सप्लेनेशन दे पारला नहीं. So due to these objections and discrepancies, a new model was introduced which is known as vector atom model. माने समरफील्ड बोर्स थ्योरी जो मॉडिफिकेशन को कले तार जो मॉडल को पुणी अगेन फर्दर मॉडिफाई करागला नुआ मॉडल गोटे आसिला पुणी वेक्टर एटम मॉडल व्हिच इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन एंड स्पाशियल क्वांटाइजेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द समरफील्ड्स मॉडिफिकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी. Thank you.